वेलकम बैक टू चेसिंग द टारगेट 2-1 हो चुका है एंड आज टेस्ट मैच को देखते हुए ऐसा लग रहा था अच्छा होगा टेस्ट मैच लेकिन वन साइड मार दिया इंडिया। जडेजा 5 उठा लिया, जायसवाल फिर 200 मार दिया। जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग कैप्टेंसी फ्रॉम रोहित शर्मा, काफी उनको क्रिटिसिज्म मिली डे 2 पे बट ही मैनेज टू पुल थिंग्स बैक। 2-1 आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना वन साइडेड होगा राजकोट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज खत्म हो जाए ऐसा लग ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि फिफ्थ डे सेकंड सेशन तक तो जाएगा, पर जिस तरह से सरफराज और गिल जायसवाल ने मारा है, पूरा मोरल उनका डाउन कर दिया इंग्लैंड का। फिर बाद में वो कोको भी नहीं कर पाए। Really? Yeah. Mustafa, 2-1 Rajkot. What are your initial thoughts on the game and how India fought back? Commendable, of course, but like, where do you think England lost it? They lost it. वो जो पार्टनरशिप जो टूटी थर्ड डे में, जो रूट का जो रिवर्स स्वीप था, आई थिंक दैट इज वेयर दे lost the game and they just पूरा they just went and crashed the car and it was all the but India के लिए बहुत credit भाई, because Ashwin नहीं था Faiz like that and there were still 8 wickets to go in that first innings. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि England are very much in this game, but the way India bowled, Siraj, Bumrah, आपके Kuldeep, Jadeja, they all bowled really well. And Rohit की कैप्टनसी भाई तारीफ करना पड़ेगा, because when he's not doing well I also criticize him, we all criticize him कि ये क्या कर रहा, like कहाँ है जज्बा विराट कोहली वाला and all that, मगर आज उन्हें दिखा दिया कि he has that. And with an inexperienced side, okay, he has a good bowling attack, but a man down and inexperienced batting, India 2-1 up. And it's not an easy series. Up there you can see कि there was a big win, मगर फिर भी भाई they were tested in this match and the way they came out of that, आपको पॉजिटिव्स देखना पड़ेगा. एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज विन फॉर इंडिया, बहुत जबरदस्त. मतलब 400 रन से आप जीत रहे अगेंस्ट दिस टीम व्हिच इज अ गुड टीम, जो आपको पहला मैच हराए. तो आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी and incredible from Rohit Sharma, Jadeja, Jaiswal, all of them. Sarfaraz also, bhai, what a debut, man, crazy batting. Yeah, what a debut. And again, dono, from the streets of Mumbai, Jaiswal and Sarfaraz, दोनों सेम मतलब मैदान में खेले and stuff like that. It was a good story कि they managed to get. You saw जिस तरीके से सरफराज started celebrating as soon as Jaiswal hit his 200, उन्हें पहले हाथ उठा ले जैसे उन्हें मारा था. Yeah, it was a very good moment. But तेरे भाई जायसवाल के बारे में बोलो यार, क्या बैट्समैन है. मतलब ये एज में इतनी मैच्योरिटी के साथ इतनी जबरदस्त डांसिंग ऑन द विकेट बोलते जो अपन गैप्स. जिमी एंडरसन को 3 छक्के आ रहे बेचारा 41 में आज खा लिया. वही ना, देखा जाए तो उनके जो 300 मारा अब तक उसने, एक कुछ तो भी 174 है इन वेस्ट इंडीज, बाद में ये इधर 200 सेकंड टेस्ट मैच में, अभी ये 200. मतलब वो जब अच्छा स्कोर करता है, 100 मारता है तो डैडी 100 में कन्वर्ट करता है, ये देख लिया. और जो आदमी डैडी 100 कन्वर्ट कर सकता है, लगता है कि टेम्परामेंट बहुत अच्छा है. क्योंकि जैसे नॉर्मल जो ऐसे कोई बंदे हैं वो देखे जाए तो 100 150 मतलब 150 के और 100 के बीच में ही हो जाते हैं, कंसंट्रेशन दे देते हैं. पर इसका कंसंट्रेशन भी नहीं जा रहा है, अच्छा खेल रहा है कंटिन्यू, और जो निकल के मार रहा है. ऑलमोस्ट सक्सेस इन द इनिंग्स का रिकॉर्ड मैच कर दिया उन्होंने, 12 छक्के मारे. ब्रिलियंट बैटिंग. काफी रिकॉर्ड्स तोड़े इंडिया. आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट कितना टोटल वाइज जो जीते अगेंस्ट रन्स वाइज हाईएस्ट टेस्ट win है India के. Yeah, and then Jaiswal, I think maximum number of sixes in an innings. Mustafa, Jaiswal, in your words, how do you express him? Because जिस तरीके से उन्हें बैटिंग करा, this guy looks like he's been playing cricket for like 5 to 6 years already. He is, I mean, yeah, for India, like you're right, बहुत जबरदस्त जो बैटिंग जैज बॉल बोलना है, जो भी बोलना है, जो एग्रेशन के साथ खेला उन्हें, एंड consistency he's showing. I think he might be maybe the fastest or second fastest 2000 runs अभी, like I think 13 इनिंग हो गए उसके. The fastest 13 में 860 कुछ तो भी रन से. अगर 150 मार दिया नेक्स्ट इनिंग में तो he'll equal fastest Vinod Kamble. Yes, yeah, I was going to tell yeah. Vinod Kamble is the fastest, but yeah, वही I think Jaiswal immense maturity also, ऐसा to convert. आप ठीक है, आप 100 मार दिए, इंजर हो गए, you could have just put your feet up, relaxed, enjoy the rest of the game. मैच तो जीतने वाले थे, लेकिन उन्हें वापस आके जो फिर आज जो मारा भाई, ठोक के, it was too much. It was incredible to watch and I really enjoyed it. And I just hope कि भाई इसको back करते जाए because there will be slots where he doesn't perform. But also, Faiz, if you see Shubman Gill, unlucky not to get 100, but this is why I was saying do not drop this guy. Do not
drop like young talent जो है आप back करो गलतियां करेंगे करने दो, but these guys are talented. Like again Shubman Gill scored a 90 in this innings, he scored 100 in the last game. तो मेरे हिसाब से you shouldn't really you should keep backing these guys. Jaiswal will come, there will come a time where he'll be challenged, but I think the way he's been playing cricket, the way he started Test cricket, it's been surreal to say the least. बिल्कुल नहीं, शुभमन गिल का तो विदाउट अ डाउट यार, वो जिस तरीके से उन्हें ही मतलब he took his very sweet time डिफेंड करा, बट जब इरिटेट करना था इन टर्म्स ऑफ इंग्लैंड को और प्रेशर डालना था, जिस तरीके से बाउंड्रीज मारा, he got into the swing. अनलकी था रन आउट उसका, बहुत अनलकी रन आउट था, बट या आई मीन इट्स सैड, बट अच्छा ही है. एट सम टाइम 100 हो गए, कंप्लेसेंट नहीं हो रहा, he going back 91, he'll be more hungry probably the next game, but ब्रिलियंट लाइक यू सेड, उसको बैक करना बहुत जरूरी है. और प्रिंस का टाइटल जो दिया आप लोग इतनी जल्दी से, आप भूल जाते कि प्रिंस को आप पद से निकाल दे रहे, तो इट्स लाइक यू गॉट टू टेक योर टाइम. आप आराम से शुभमन गिल का गेम देखने में बहुत मजेदार है. यस, थोड़ा उन्हें टाइम लिया ये टाइम, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गेट आउट, ही डिडंट वांट टू फॉल अंडर प्रेशर, एंड ही राइटफुली सो. बट या शुभमन गिल है यार, बहुत टाइम के लिए रहेगा होपफुली इंडियन क्रिकेट टीम में, एंड पार्ट ऑफ दिस थिंग. फ्यूचर कैप्टन है, इमीडिएटली आईपीएल कैप्टन है, तो बहुत सी चीज ना उसके फेवर में भी जा रही है उसके. उसकी सेंचुरी के बाद भी लोग बोल रहे थे कि निकालो उसको, तो ये इनिंग्स बहुत वाइटल था, लाइक फॉर हिज कॉन्फिडेंस, फॉर सिक्योरिटी वाइज. और पेयर पे था ना, फर्स्ट इनिंग्स में 0 था, पेयर पे था, फर्स्ट इनिंग्स में 0 था. एंड वो आप एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, उन्हें हर मैच में नहीं मारेंगे, ही विल फेल, एंड पीपल आर वर्किंग हिम आउट, बट आई थिंक दिस इनिंग्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट शुभमन गिल के हिसाब से, बिकॉज he's been failing in the last few months, but to come and score 100, then back at that with 90, दोनों winning contributions, I think that says a lot about his character and a lot about his skill. तो आपको back करना पड़ेगा, and he was well supported by Kuldeep, then run out हो गया उन्हें, लेकिन yeah, he was gonna bang 100 today also. So I गैबा में भी 91 पे आउट हुआ था. हाँ, 91 पे आउट हुआ था. तो ये आप like भूलना नहीं चाहिए कि ये बंदा है, like he is very good, and we shouldn't go on short term memory कि ठीक है उन्हें 0 पे आउट हो गया, वो हो गया. वही है ना, अभी कम बैक टू द फैन. इंडियन फैंस अपन इतने ईगर रहते कि हर चीज जीतने का, एंड वी सॉर्ट ऑफ लूज ट्रैक कि भाई इंसान है एट द एंड ऑफ द डे. 11 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनका भी इंसान है, उन लोगों का भी अप डाउन होने वाले हैं. एंड आई थिंक अब सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट थोड़ी बहुत, आई थिंक जो ऑफ द पास्ट अब रिसेंट वाली जो आई, आपको थोड़ा बहुत उनपे भरोसा है कि सिलेक्शन वाइज एटलीस्ट सही कर रहे हैं. सरफराज का इंक्लूजन, ध्रुव जुरैल, विल कम टू हिम एज वेल, फैंटास्टिक. मतलब हम लोग दोनों बोल रहे थे फ्लैट विकेट है मुस्तफा, बट आज जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं उन्होंने, इट वाज ब्रिलियंट, वेरी गुड रन आउट, वेरी गुड रन. सिराज क्या कि वेवर्ड फेंक दिया उन्हें, कैसे की कलेक्ट करके. फर्स्ट इनिंग्स में कुलदीप भाई को रीड नहीं कर पा रहे थे, वो हमने देखा कि 22 के 2-3 बार चौके भी गए, एक बार लीक हुआ है, कुलदीप भाई भी पुकार दिया था उसपे. हाँ, तो आज जो अच्छी कीपिंग किया, आज मतलब फर्स्ट इनिंग से सेकंड इनिंग्स में काफी इंप्रूवमेंट दिखा उनकी कीपिंग का. या तो वही है कि आई थिंक आज इंडियन फैंस अपन इतने ईगर है जीतने के लिए कि वी डू नॉट गिव एनीवन दैट काइंड, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मुस्तफा एट टाइम, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी एट टाइम्स. बट शुभमन गिल जो तरीके का सर्वेंट रहा है अभी तक लास्ट ईयर में, आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्पॉट. सिमिलरली अब सेम विद जायसवाल. अब जैसे जायसवाल 200 पे 200 मारा, 1 3 4 5 6 इनिंग्स आप जाने देना पड़ेगा उसको. लाइक आप देखो अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज आने वाला, ऑस्ट्रेलिया टूर आने वाला एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, दिसंबर जनवरी में. वहां पे अगर सरफराज डक पे आउट हो गया या जायसवाल आउट हो गया, पीपल विल से इसको निकालो, इसको लेके आओ, इसको. दैट्स वेयर यू हैव टू रिमेंबर दीस काइंड ऑफ इनिंग्स. ठीक है, बेशक इंडिया में हुए, सब कॉन्टिनेंट में हुआ, लेकिन जब ये खिलाड़ी बाहर जाएंगे, दे विल बी चैलेंज, दे विल फेल, लेकिन आपको बैक करना पड़ेगा, राइट? लाइक विराट कोहली had like 100 ducks in that 2014 series, but we backed him and he turned out to be the greatest cricketer of the modern era. So like I think that's where you have to back these guys. They will have failure. Shubman Gill will also fail away from home. Sarfaraz will also, Jaiswal will also. लेकिन आपको बैक करना पड़ेगा because potential है. और pressure situation, ठीक है आप घर पे खेल रहे हैं, लेकिन माहौल क्या था? माहौल भाई Bazball आ रहा, they're coming to smash you, they're coming to get you, and they were hitting. ऐसा नहीं है कि don't let the scoreboard fool you. India were under pressure in this test match also. So taking all that into consideration, these guys came up and they stepped up to the plate. ठीक है, result आ गया, so you can say that you need to stick to this team and everything. But these players, when they fail, you have to back them too. एक और चीज जस्ट गाइस टू आई विल गो. मेरे इंग्लैंड का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सेम विकेट थी, फ्लैटर सरफेस था डे 3 तक भी, बट आप इतना बुरा क्यों फेल हुए? लाइक इन टर्म्स ऑफ बैटिंग दे हैव क्वालिटी इन देयर बैटिंग, बट दे जस्ट नॉट एबल टू एग्जीक्यूट. आप देखो डे 2 के एंड पे आप बेन स्टोक्स है 207 मार लिया, मैं
half the score मार लिया. I just have to go into day 4, and he said he wanted to bowl also at the end of day 3. मेरे हिसाब से इंग्लैंड जो क्वालिटी लेके आ रही, they're not justifying it now in this series. I'm not saying that they're not an amazing side. अभी भी खतरा है भाई. Ben Stokes अभी भी they can get it back. But day 3 में as like cricket वाले अगर अपन सोच रहे हैं, इतना भी फ्लैट विकेट था, फ्लैट टी विकेट था यार, आप इतना बुरा क्या फील हो जा रहे? नहीं, वो क्या हुआ मालूम है क्या? मॉर्निंग में जब पहला कव कॉर्नर पे 4 मारा डकेट ने, और जब रोहित ने उधर फील्डर जमा दिए, मतलब डकेट का पूरा लेग साइड ब्लॉक कर दिया, तो क्या डकेट फ्रस्ट्रेट हो रहा था कंटिन्यू. उसके जब रन नहीं आ रहे थे तब, और एक बॉल उसका आई थिंक ज्यादा पलटा भी, राइट? जस्ट बिफोर यू तो वो, और फिर बुमराह वहां से कंटिन्यू मेडन पे मेडन डाल रहा था. तो वो कैसा हो रहा था कि रन्स नहीं आ रहे थे, और जैसे रूट इसने बोला था बेन स्टोक्स ने, उनकी प्लानिंग ये थी कि थर्ड डे पे पी के बाद तक थोड़ा 1-1.5 घंटा बैटिंग करे, फिर बाद में इंडिया को लाना था उनको. उनकी प्लानिंग ये थी कि बहुत मार के उनको खेलना है. पर रोहित ने क्या किया अच्छी कैप्टनसी ये करके कि पहली ओवर कुलदीप को दे दी, और फिर बुमराह को लगा दिया, और लेग साइड पूरी की पूरी ब्लॉक कर दी डकेट की, जो वो लेग साइड पे टारगेट कर रहा था. तो प्रॉब्लम क्या, उनके रन नहीं आ रहे थे, फ्रस्ट्रेशन आ गया. रूट ने वो शॉट ट्राई किया, रूट आउट हो गया. उधर ओपनिंग दिख गई. उधर ओपनिंग दिखने के बाद स्टोक्स अच्छा खेल रहा था, पर जो शेल में चले गए स्टोक्स और फोक्स, फिर बाद में वो निकल नहीं पाए क्योंकि रन ही नहीं आ रहे थे. रोहित शर्मा का ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने रन रोक दिए, और वही है ना, बैसबॉल को आप अगर उनकी बाउंड्रीज रोक दोगे तो प्रेशर में आएंगे. I think I'm going to call out सबसे बड़ा कारण उसका, because you know this batsman very well. इंडिया में का जॉनी बेयरस्टो बहुत मतलब he's had a very poor series. What do you think is wrong with this guy exactly? Like, where do you see is there a technical problem, or is it just like he's thinking about the spin way too much and premeditated shots खेलने जा रहा, या उसका इशू क्या है? जॉनी बेयरस्टो जो कर सकता, he is one of those जो कॉन्टेक्स्ट गेम का बदल सकता, like अपने he is the flag bearer of Bazball. उसने शुरू किया ये जो मारने का था. आपको याद है वो सेशन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहां पे आप 360-70 चेस कर रहे थे, एकदम से उन्हें पलटा दिया था मैच को. एंड जब से Bazball was on a high, तो आई थिंक इट्स लुक he came back from an injury. उसके बाद एशेज में ही वाज ओके विद द बैट. मैनचेस्टर में जबरदस्त बैटिंग करा, बट कीपिंग का भी इशू था. ही इज जस्ट नॉट इन फॉर्म. एंड आई थिंक मेन प्रॉब्लम जो इंग्लैंड का था ये टेस्ट मैच में, उन लोग सिचुएशन नहीं खेले. लाइक यू हैड इंडिया ऑन द मैट ऑन द बैक फुट, और आप वापस दे दिए गेम. ठीक है, आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, शॉट्स खेलो, लेकिन वही है कि अगर बैक टू बैक अगर 5-6 विकेट खो देंगे, वो भी अवे फ्रॉम होम, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक. यू गॉट टू प्ले द सिचुएशन आल्सो. You can still play like how you played in Hyderabad. You played the situation. ऐसा नहीं है कि उन्हें हर मैच हर बॉल फिराया Pope. Folks was standing on one end. Pope was looking at places where he can attack. वैसा खेलना था. I think they were all just trying to go one way. And जैसा तेजस भाई बोले, उन लोग frustrate होके विकेट फेंक दे रहे थे. So that was I think the biggest problem is they didn't play according to what the current situation demanded. उन लोग बहुत आगे का सोच रहे थे. भाई हम टी पे डिक्लेयर कर देंगे, वो कर देंगे, उतना क्यों सोचना है? आप बॉल पे बॉल देखो, और फिर उसके बाद एंड अगेन look, the narrative will keep changing in this series, and this is why this is a very good series. पहले टेस्ट मैच के बाद हम लोग इंडिया की क्रिटिसिज्म कर रहे, इंग्लैंड की तारीफ कर रहे थे, फिर उसके बाद पूरा बैलेंस हो गया था. अभी हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंग्लैंड की. And I think the main reason England's at fault over here is because they didn't play the situation and they looked too far ahead in the test match. I think that same thing happened. Vizag में भी वही चीज हुई. आप देखो सिचुएशन थी, they could have made a comeback there also, but फिर वही मार धाड़ करके, like I mean I'm not saying कि आप day 4 day 5 पूरा खेल सकते थे, but they said नहीं, मैं day 4 पे जाके मार देंगे. एक और चीज जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे पहले दिन पे, और ये वाइजैक में भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ, फील्डिंग उन लोग चांसेस दे दी इंडिया को. जब तेजस को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, अगर आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे, और ठीक है एक आध चांस ड्रॉप हो गया, कोई नहीं, वो तो होता है टेस्ट मैचेस में, बट देन इफ यू गिव दैट मेनी चांसेस अवे, यू आर ऑलवेज बिहाइंड द 8 बॉल. फर्स्ट टेस्ट के और दो टेस्ट में डिफरेंस क्या है मालूम है क्या? इंडिया को पता चल गया कि इनका रिलीज शॉट बस स्वीप शॉट से वो स्वीप ही मारेंगे, और प्रॉब्लम ये है कि वो बैक फुट पे जा रहे हैं. बेस्ट्रोक का मेन प्रॉब्लम ये है, पूरे डिस्मिसल्स निकाल लो, वो पूरे के पूरे स्पिन बैक फुट पे खेलने का देख रहे हैं. और वही देख लिया है जडेजा और कुलदीप भाई ने कि बेस्ट्रो आया तो आगे डालते हैं स्टंप पे, तो उसको क्या लगता है मैं बैक फुट पे खेलूंगा, थोड़ा टर्न होके बॉल सीधा स्टंप पे जा रहा है, वैसे उसको कट कर रहे हैं. उसको थोड़ा पीछे डाल नहीं रहे, उसको आगे हाफ बॉल ही डाल रहे, क्योंकि वो क्या है पीछे के लिए खेल रहा है पूरे बॉल.
जब ऑफ वॉली पीछे खेलेगा वो तो आउट ही होगा, एक तो बोल्ड होगा नहीं तो एलबीडब्ल्यू होगा। मेन प्रॉब्लम उधर आ रहा है उनका। देखो अभी आप ठीक है, आपको टॉस आप हार गए, बैक फुट पे थे, ऑल इज फाइन, लेकिन रांची में अगर उन लोग टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं और अच्छा स्टार्ट दे दिया, इट्स अबाउट मेंटेनिंग दैट आल्सो, राइट? इट्स अबाउट सस्टेनिंग कि भाई आपका जो स्टार्ट है आप कैसा करो। कल का मैच देख रहा था, कौन सा पीएसएल वाला था, उसमें आपको उसका नाम कैसा प्रोनाउंस करते, साहबजादे हाँ, उसका जो इनिंग थी लाहौर के लिए, पहले 20 बॉल में 40 मार दिया था, नेक्स्ट 16 बॉल 16 रन, सो दैट हिज उसका जो मोमेंटम था गिर गया वो, आफ्टर ही गिव सच अ सॉलिड स्टार्ट। यू शुडंट draw. I'm not talking about like, okay, in T20 strike rate is very important, that's what I'm talking about it, but I'm just talking about the runs also coming. आप 200 अगर मार दिए, आप एकदम से लूजली, you can't let go, you have to maintain that pressure and you have to continue batting, जैसा जायसवाल और सरफराज आज करे, they didn't leave the pedal today, accelerator दबा था पूरा सेशन, तो वो आपको करना है, आपको सस्टेन करना है, वो प्रेशर आप चूक नहीं सकते ऐसे सिचुएशन। टेस्ट क्रिकेट इज it's a big challenge, so you have to continue going. वो आई थिंक वो जोन मेंटेन करना जरूरी है, फील्डर्स पे प्रेशर मेंटेन करना जरूरी, बॉलर के माइंड पे प्रेशर जरूरी है। लाइक आई थिंक आप जो बोल रहे, आई थिंक दैट्स राइट, बिकॉज़ अगर आप आप यू पुट योर फुट ऑफ द गैस, बॉलर्स और सोचने के ऊपर मजबूर रहते हैं और क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, जो आई थिंक कोई कमेंट्स में बोले, इब्राहिम भाई बोले, लाइक क्रिएट अपॉर्चुनिटीज करना शुरू कर दिए थे। जब आप कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर फेंक देते बॉल, बट जब बॉलर्स इजी हो जाते हैं कि हाँ भाई इन्हें भी ठंडा हो गया, हम जरा आप सोच सकते हैं, तो आई थिंक वो चीज बहुत जरूरी है कि वो आप प्रेशर मेंटेन करके रखो। मेजर प्रॉब्लम है कि जो डिफरेंस है ना वो स्पिनर्स का है, कि आप देखो जब सरफराज और जायसवाल बैटिंग कर रहे थे तब कितना टर्न मिल रहा था, और बाद में क्या 10 मिनट के बाद ही तो कुलदीप और जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, उनको कितना टर्न मिल रहा था। मेन प्रॉब्लम वही है कि आप जिस तरह से रिलीज कर रहे हो, जितने रेव्स दे रहे हो बॉल पे, वो मुश्किल है। अगर उनके पास जैकलीज जैसा बॉलर रहता, मुझे लगता कि वो दे आर मिसिंग जैकलीज और मोइन अली के जैसा कोई तो भी। एंड वही है, एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आपके स्पिनर बेहतर है, यू नीड टू परफॉर्म बेटर इन दीस सिचुएशंस। और मैं और फैज यही बात कर रहे थे डे 2 के बाद कि ठीक है आप 200 रन मार दिए इंग्लैंड, लेकिन you have the quality spinners, you need to come back into the game. Ab then Ashwin got injured and thing, I didn't expect India to come into the game like this, magar that's what you expect कि ये bowling lineup में आपके conditions में you are a better bowling lineup and matches वहीं आप जीते, दोनों मैच bowling के साथ जीते आप। बुमराह का स्पेल पिछले मैच में, सिराज का स्पेल ये मैच में, फिर जडेजा का स्पेल सेकंड इनिंग्स में, तो आई थिंक तेजस मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि bowling का भी बहुत फर्क है, और जो पहले टेस्ट में आप गलतियां करे बॉल के साथ, आप वो नहीं दोहराए सेकंड और थर्ड टेस्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, रिपीट नहीं करे अपने मिस्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेल था कुलदीप भाई का था, थर्ड डे मॉर्निंग का जो निकाले को फंसा के रखा था, उधर मैच टर्न हो गया पूरा, ब्रिलियंट स्पेल था पूरा। First थोड़े आप comments ले लो, I think आपके yeah we have a few comments so you can take. Odi India is in the house. He's saying के मुस्तफा भाई Chelsea fan हो, Man City 1-1, आप तो Chelsea fan नहीं, मुस्तफा भाई Chelsea fan नहीं, हम ना दोनों United fan है, and तेजस भाई Real Madrid up the Chelsea baby up the Chelsea। कुलदीप भाई स्टेप आउट करके छक्का मार रहे थे फुल डॉट, मेरे को तो ब्रायन लारा की फीलिंग आई जब उन्होंने बैटिंग करे थे, जबरदस्त फीट एंड द सिक्स दैट ही केम आउट एंड स्मैश्ड इट, ब्रायन लारा वाइब्स दे दी उन्हें पूरे को, एंड ही इज genuinely working on his batting। यस यस बिल्कुल, वर्ल्ड कप में भी उनको नेट्स में डाल रहे थे, कर रहे थे, बस ही इज नॉट लाइक, ही डजंट रियली लाइक। अगर आपको पता है कि एक स्टैट फॉर हिज रणजी टीम एक सीजन में वो हाईएस्ट रन गेटर और हाईएस्ट विकेट टेकर थे, कुलदीप यादव। आज पढ़ा मैंने, वो तो मेरे को लाइक हम लोग अब क्लोज भी देखे और अब रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कि ही इज वर्किंग ऑन हिज बैटिंग एंड दैट्स अ वाइटल कंट्रीब्यूशन। और आपको कॉन्फिडेंस देखो कि हम लोग कितने बार बोलते कि इंडिया की टेल नहीं है, इंडिया की टेल नहीं है, मगर फाइनली ये सीरीज भी इंडिया की टेल थी। बुमराह भी आ रहा है आके, बुमराह भी मार रहा है, अश्विन मार रहा है, इन्हें मार रहा है, कुलदीप भाई मार रहे, सब मार रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है इंडियन क्रिकेट के लिए भाई, टेल इज फाइनली वैगिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो आगे जाके। भाई फिर आईसीसी इवेंट्स नहीं जीत पाते, प्रॉब्लम यही है ना भाई, आप साल के 12 महीने में आप एक्सपेक्ट करें हर चीज जीतना, आप बायलैटरल भी जीतता, आप उतने प्रेशर आप लोग बायलैटरल्स पे भी डालते, उतने प्रेशर आप आईसीसी इवेंट पे भी डालते, उतने प्रेशर फिर उनको आईपीएल में भी मिलता है, उतने तो आदमी सांस लेगा कहां पे। आई थिंक
yes, they should ideally with the squad and the talent and the quality that India have, they should win everything. But possible नहीं है. तो जो stretch of innings होती है ना, like जैसा अब जायसवाल चल रहा है, जायसवाल might not work consistently 12 महीने साल के, सेम है शुभमन गिल, सेम. तो ये जो criticism अपन लोग देते बहुत जल्दी आते. पैच एक होता है कि हाँ भाई लॉन्ग फॉर्म ही पुराना बुरा है. पैच बोले थोड़े टाइम को इट मेक सेंस कि खराब है, बट पूरे को अगर अल्टीमेटली दिख रहा है कि हाँ 10-12 मैचेस दे दिए भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा हक दे रहा है. जैसे केएल राहुल के टाइम पे आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम, देन आई सेड कि भाई ये नहीं बनता, ये नहीं दिख रहा. बट फिर उन्हें ब्रेक लेके आया, ही केम बैक, एशिया कप में आया, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. द फैक्ट है कि भाई आईसीसी इवेंट्स अगर आप जीत पाना चाहते तो थोड़े बायलैटरल अपन जाने भी देना जरूरी है. लाइक हाँ ठीक है, हारे हारे नो प्रॉब्लम. मैं इस पे क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं भी लाइक आई एग्री विद स्पोर्टी इंडिया बिकॉज ठीक है आप आईसीसी इवेंट्स निकाल लो, ठीक है, पिछले 10 साल में अपार्ट फ्रॉम गैबा का सीरीज और जो विराट कोहली जीता था ऑस्ट्रेलिया में, आप अवे सीरीज अवे फ्रॉम होम न्यूजीलैंड के साथ आप हार गए, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ हारे, ड्रॉ करे, और आई थिंक 3 हारे 1 ड्रॉ करे. पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं इंग्लैंड में आप 1 ड्रॉ करे, आप हारे. उससे पहले जो 18 में जो विराट कोहली क्रेजी खेल रहा था वो आप हार गए थे. तो आप ठीक है आप आईसीसी इवेंट्स निकाल लो, फैस की बात ठीक है, लाइक यू नो डोंट काउंट ऑन दैट, बट फिर भी आई हैव दिस क्रिटिसिज्म व्हेन इट्स क्रंच मैचेस और चैलेंजिंग कंडीशंस या चैलेंजिंग सीरीज आप निकल के आते नहीं. यू नो दिस इज स्टिल अ चैलेंजिंग सीरीज बट अगेन इट्स एट होम एंड आई एम्फसाइज दिस पॉइंट कि इंडिया नीड टू with you know the ability they have, the personnel जो आपके पास है, you need to have more consistent performances. ठीक है आप हर मैच नहीं जीत सकते, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन when the going gets tough वहां पे जीतना. Gabba is the only exception in this, like for me. आप लाइक यू नो वहां पे स्मिथ वार्नर सब मौजूद थे और आपके प्लेयर नहीं थे, आप जाके जीते, लेकिन वो कंसिस्टेंसी किधर है? इफ यू वांट टू बी द ऑस्ट्रेलियन टीम, रिकी पॉन्टिंग, दीस गाइज, इवन पैट कमिंस, why are they going to be remembered? Because जहां पे चैलेंजिंग कंडीशंस था, कमिंस जाके वहां पे भी ड्रॉ करा इंग्लैंड में, फिर उन्हें WTC भी जीता, फिर इंडिया में जाके वर्ल्ड कप जीता. You know, so this is why they will be remembered, and that is what you want to do if you're an इंडियन क्रिकेट टीम. आपको ये चैलेंजिंग सीरीज भी जीतना है. अब साउथ अफ्रीका का ड्रॉ कर दिया यार, फर्स्ट लाइक नहीं वो सही. आई थिंक ये जो बात थी ऑन थिंग है कि शुभमन गिल की फॉर्म के जब अपन बात करें, जब स्पोर्ट इंडिया को मिला, लाइक प्लेयर वाइज आप ये एक्सपेक्ट हर प्लेयर एवरी टाइम जो आपका मेन प्लेयर है वो परफॉर्म करेगा. बट बात सही है कि आउट ऑफ इंडिया अगर आप जा रहे, बिकॉज इंडिया में तो देखो इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है. लाइक इट्स द टफेस्ट प्लेस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सेप्टेड इट. बेन स्टोक्स जैसा कैप्टन अब आके धूल चाट रहा, तो बिल्कुल सही बात है. बट आई जस्ट थिंक कि भाई व्हेन इट कम्स टू प्लेयर फॉर्म्स एंड स्टफ, वी नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट एज फैंस. That's what is fine, but the end of the day जो आप बोलते रहे जीतने का है, आप वहां पे जीतो जहां पे सब याद रखेंगे, राइट? एंड आप इतना करीब आके हारते हर वक्त. तेजस, आई डोंट नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन दिस, बट मेरा यही है कि जब चैलेंज, तो जैसा स्क्रिप्ट लिख रहा है वेस्ट इंडीज का, जैसा बोल दिया वी विल बी इन द फाइनल, स्क्रिप्ट उन्होंने लिख दिया. 19 नवंबर को विजिट है भाई. नहीं सही बात है मुस्तफा भाई जो बोले कि वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि, पर अभी मुझे लगता है कि अभी जीतेंगे बाहर भी जाके, जो माइंडसेट से खेल रहे हैं अभी, जो यंग गन से जो खेल रहे हैं. पर मुझे लगता है कि लास्ट 5-7 इयर्स में जो होम सीरीज है सबसे डिफिकल्ट सीरीज यही है इंडिया के लिए. जिस तरह से सीनियर प्लेयर्स नहीं है इंडिया के पास अभी, और जिस तरह से देखा जाए तो अनडिफिटेड है बैसबॉल अभी तक. उन्होंने सीरीज जीते या तो ड्रॉ किए, वो कौन सा भी सीरीज हारे नहीं है मैकेल अभी तक. एशेज उन्होंने ड्रॉ किया, पाकिस्तान में जीते, उससे पहले भी जीती रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, उसमें बेसबॉल नहीं था, उसमें ये नहीं था, ब्रैंडन मैकलम नहीं था तब तक आया. जब से मैकलम न्यूजीलैंड में ड्रॉ किए थे, तो अभी तक हारे नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये टफेस्ट सीरीज है 5-6 साल में अभी के. पर देखते, मुझे लगता है कि इंग्लैंड वापस आएगा रांची में, तब रांची में इंडिया ये देगा रैंक टर्न देगा. नहीं रांची में रैंक टर्न देगा इंडिया. यार मतलब अभी देखो, लाइक आई कंप्लीटली एग्री, ये जो द मोस्ट कंपेटिटिव होम सीरीज. मगर अब मेरे को बोला, अगर आपको बोलता हूँ भाई जून में इंग्लैंड को जाना है, वहां पे ओवरकास्ट होने वाला है, वहां पे उन लोग ग्रीन पिच डाल रहे हैं, आप ये टीम के साथ कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, ना मैं रहूंगा, ना फैंस रहेंगे, ना आप रहेंगे. अगर हकीकत की यही बात है, राइट, कि आप जायसवाल को लेके जाओ, सरफराज को लेके जाओ, हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा इंग्लैंड में. एंड स्पेशली ठीक है जो अल्ट्रा पॉजिटिव है वो लोग पॉजिटिव रहेंगे, एक टेस्ट मैच के बाद वो उतर देंगे पॉजिटिविटी. नहीं आप देखो ना कि यहाँ पे सरफराज, जायसवाल, जायसवाल क्यों इतने सक्सेसफुल है,
कि वो रणजी में खेलते आ रहे, वो इसी पिच पे खेलते आ रहे, इसी पिच पे उन्होंने रणजी के 20-20 मैच खेले एक सीजन में, इसीलिए वैसे तो जब वो बाहर जाएंगे तब उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको प्रॉब्लम्स उधर आएंगे। भी अडेप्ट करना पड़ेगा। Well, I won't blame them, मगर this is the problem with India कि like हम लोग टफ कंडीशंस में वो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं। लाइक कोई भी आप रहने दो, विराट कोहली की टीम से लेके उससे पहले धोनी की टीम भी लाइक टेस्ट में हम नहीं जीते कहीं भी, लाइक वी डिडंट रियली विन एनीवेयर अवे फ्रॉम होम। 4-1 आप इंग्लैंड में हारे, 4-1 यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हारे आप धोनी के साथ। तो लाइक रिसेंटली वो गैप थोड़ा कम हो गया है, एक तो ड्रॉ कर रहे हो आप, नहीं तो एक मतलब इंग्लैंड में भी ड्रॉ किया, अभी साउथ अफ्रीका में ड्रॉ किया, आगे चल के मुझे लगता है कि जीतेंगे भी होपफुली जल्दी। Yeah, I mean improvements हो रहे, लेकिन अगर if you want to be very critical, you should be winning those series, especially when you're 2-1 up। आप 1-0 up थे साउथ अफ्रीका में पिछले सीरीज में, नॉट ये दौरा नहीं, उससे पहले जो था आप 2-1 up थे, आप इंग्लैंड में 2-1 up थे। तो वो जो आप जब वो पोजीशंस में है इतनी अच्छी टीम के साथ, तो फिर लाइक यू नीड टू थिंक। एंड देन अगेन वर्ल्ड कप का तो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉक, मगर प्रॉब्लम तो वही है भाई, आप सेमीफाइनल फाइनल में उड़ जाते। अभी तो मुझे लगता है कि मेन सीरीज ये रहेगा न्यूजीलैंड इंडिया, जब न्यूजीलैंड इंडिया आ रहा है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ यार, वो लाइक लाल द्राविड जिताया था अपना। कमिंग इन इंडिया, न्यूजीलैंड इंडिया वो तो कुछ भी नहीं होगा यार, प्रॉब्लम ये होगा जब इंडिया न्यूजीलैंड जाएगी। इंडिया न्यूजीलैंड का ही तो प्रॉब्लम है, बिकॉज़ लास्ट जिस तरह से फॉर्म में चल रहा है ना न्यूजीलैंड के साथ, नहीं फॉर्म सही है, बट अगेन कॉम्पिटिटिव होगा। स्क्वाड की डेप्थ से कुछ ज्यादा है नहीं भाई, लाइक दे डोंट हैव, लाइक दे हैव मिड सैंटनर, उसके अलावा लाइक दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी स्पिनर्स। ठीक है, थोड़ा सा रचिन रविंद्र ये वो है, रचिन रविंद्र है, नो डाउट दे वेरी गुड राइट नाउ, दे वन अ सीरीज इन साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम। पर वो तो नहीं यार, वो तो मैं तो वो सीरीज भी बोलता ही नहीं हूँ। बच्चों उधर मार दिया, उधर 7 डेब्यू हो रहे हैं, उनके सामने तो कोई भी जीत जाता है। मतलब ऐसा ऑन पेपर तो वो जीत गए सीरीज, सही है, पर एक भी आपका फर्स्ट 11 नहीं खेल रहा था, एक भी बंदा आपका, तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। हाँ, तो विजय कुमार भाई बोले जायसवाल का डीएनए टेस्ट करवाओ, कौन सी दुनिया से आया है भाई, जहाँ से भी आया एटलीस्ट इंडिया में है अभी राइट नाउ, ही इज अ जेम, बिल्कुल जबरदस्त चीज है उन्हें। अब भाई आप आईपीएल से जो अपन देख रहे हैं, मी एंड मुस्तफा लकीली आई डोंट नो अगर तेजल भाई देखे उसको लाइव, हम लोग आईपीएल में लकी इनफ थे उसको देखने के लिए, हैदराबाद को जब आया था उन्हें स्टफ, इट वाज गुड टू सी हिम बैट लाइव। The Indian bowling plan changed on day 3 with Ashwin not available. The 4 bowlers were bowling longer spells and had more opportunities to create chances. Yeah, I mean वही है, अश्विन नहीं रहने की वजह से थोड़ा longer spells मिला, they got to understand कि किधर पिच हो रही बॉल, किधर टर्न हो रहा, किधर ब्रेक हो रहा, and yeah, I mean वो तो है। स्पोर्ट इंडिया क्लब पीएसएल के बोल रहे कि पाकिस्तान बोलते हैं हमारा आईपीएल में बाउंड्रीज छोटे हैं, जबकि मैंने खुद देखा है। अरे भाई वो कौन सा था मुस्तफा, रावलपिंडी टेक मी बैक टू रावलपिंडी मैन, मतलब वहां के तो बहुत छोटे ग्राउंड, बट पीएसएल में आप देखे दे गॉट देयर ओन ट्रम्पेट साउंड आफ्टर द बाउंड्री। I was PSL तापाल चाय भाई, मतलब अगर आप लोग पीएसएल नहीं देख रहे तो इट्स अ बिट फन, लाइक मजा आ रहा देखने में, लाइक आई वॉच बोथ द मैचेस यस्टरडे। शादाब खान की भी इनिंग्स बहुत अच्छी थी yesterday, they smashed it, and Saim Ayub today again man, this guy is बॉबी हरा दिया फिर से। बॉबी के ऊपर डाल दे रहा है सब चीज़, तो बॉबी बैठ गया आज क्रीज पे। हां, तेजस बॉबी 11 of 11 and then he accelerated a bit but then got out। नीचे से उनको कुछ ये मिला नहीं ना, नीचे से कोई किसी ने मारना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, बॉबी को जीतना है अभी। मगर मेरे को तो पसंद है भाई पीएसएल, उसमें ठीक है फॉरेन प्लेयर्स काफी नहीं है ये साल, लेकिन जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो अच्छी टैलेंट है, स्पेशली बॉलर्स है, आपके शाह ब्रदर्स है, आपके जमान खान है, हारिस राव, शाहीन अफरीदी, देयर इज अ लॉट ऑफ बॉलर्स यू एंजॉय वाचिंग। तो आज अभी भी गेम है शायद, राइट? कराची का मैच है शायद। कराची ऑफ टू बॉल एक ही था, दो है कराची और मुल्तान का है। तेजस अपना शो भी शुरू हो गया पहली बार पीएसएल के लिए, नॉर्मली वर्ल्ड कप्स में आता वो द पेविलियन। अभी दोनों ही कर रहे हैं ना। वसीम भाई बोल दिए अभी कराची हारी तो मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं यहाँ बैठा हूँ बोल के, नहीं तो उन्होंने हर वक्त वहां रहते डगआउट में। स्पीकिंग ऑफ मैच, आई थिंक तेजस भाई का भी मैच है आज पुणे में, टर्फ ग्राउंड में। अगर निकलना है तो बोलो तुम, आई मीन यू कैन वेट ऑब्वियसली। 1-2 मिनट में निकलता हूँ। कहाँ जा रहे भाई, कौन सा मैच? मैच ब्रो, उनको आईपीएल स्काउट कर दिए उनको। क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे,
क्रिकेट क्रिकेट वो अंडर आर्म वाला, हाँ नहीं नहीं अंडर नहीं आर्म he's कौन bowling, सा? he's playing your favorite place, प्रॉपर turf में, turf में. टर्फ पे टेनिस बॉल। हाँ टेनिस बॉल। मैं देखा बॉम्बे में वो अंडर आर्म बहुत चलता है भाई, मैं तो ये सोचता क्या मजाक है, लेकिन गली में खेलते ना। बहुत ज्यादा चलता है बॉम्बे हम में। दोनों गए थे देखो मुंबई में। हाँ 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 उस जैसे गली में खेलने के लिए आपको अंडर आर्म में खेलना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, अंडर आर्म था वो भाई, That's why बॉम्बे Mustafa भाई, क्या मजा आता है वो। तेजस भाई, स्टीव वॉ ने कहा था इंडिया में पब्लिक प्लेयर सेंट्रिक है, जबकि होना टीम सेंट्रिक होना चाहिए, इसलिए इंडिया हारती। व्हाट्स आई मीन, देखो विराट कोहली इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, राइट? प्लेयर सेंट्रिक ही है इंडिया। अगर आप विराट को कुछ बोले तो इंडिया से आगे विराट को रख देते एट टाइम्स एंड सेम विद एमएस धोनी एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई थिंक कहीं ना कहीं टीम की जो मेंटालिटी है राइट नाउ, इट्स टीम सेंट्रिक रादर देन अ प्लेयर सेंट्रिक, एंड दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। बाहर के लोग जो सोचते हैं, आई डोंट थिंक एज अ मैनेजमेंट राइट नाउ जो रोहित शर्मा के अंडर कंट्रोल में है, इट्स मोर टीम सेंट्रिक। आई नो पब्लिक को होना चाहिए, बट पब्लिक विल नॉट मेक अ वेरी बिग, इट शुड बी विद इन द मैनेजमेंट की और कैप्टन के दिमाग में इट शुड बी टीम सेंट्रिक। तो उनका पॉइंट सही है, टीम सेंट्रिक नहीं है, बिल्कुल प्लेयर सेंट्रिक है। अब आईपीएल ही देखो, विराट कोहली खेल रहे तो अपनी टीम छोड़ देते हैं भाई, लाइक अगर धोनी खेल रहा अपनी टीम छोड़ देते। इट इज प्लेयर सेंट्रिक एंड दैट इज द मेंटालिटी। लुक, इट्स मोर आई वुड से लाइक एनबीए स्टाइल. Football is a bit different, like not like I mean Ronaldo, Messi, also there are fans who just follow them, but like you wouldn't leave like Manchester United like supporting, but people leave NBA in IPL also, you know, people leave. Agar Virat Kohli chale gaya RCB se, he'll take a lot of fans with him. MS Dhoni Chennai se chale gaya, they'll take a lot of fans with him. So it इसी is साल पता चल जाएगा। हाँ इसी साल पता चल जाएगा जब आई गेस ये लास्ट सीजन होगा एमएस का चलने के लिए। तो प्लेयर सेंट्रिक तो है भाई, आप देख लो भाई। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ एक ही टीम में दो प्लेयर खेल रहे हैं और उनके दो राइवल फैंस है, रोहित और विराट के। मैं तो वो देखा नहीं। रोनाल्डो मेसी अलग है, एटलीस्ट दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे तो साथ आपको में इससे ज्यादा बड़ा दिखेगा अभी मुंबई इंडियंस में। हाँ वही बोल रहा इससे है, बड़ा दिखेगा मुंबई इंडियंस का, मुंबई इंडियंस में नहीं। वो मुंबई विराट इंडियंस में और फड्डा चल रहा है, लाइक दोनों रोहित और हार्दिक, वो तो हर टीम साथ में खेलते और फिर भी फड्डा चल रहा। तो लाइक unity, this is the problem with this player thing, but there's nothing like what are my thoughts on it? I don't know, man. Each to their own. If people like to like support one player, then okay. Like, but if they like to support the team, then okay. Like, it depends, right? Yeah, because the only positive that I saw of like the player centric model is कि भाई लोग आते देखने, like you know, भाई अपन आरसीबी सनराइजर्स में भाई, बट द प्रॉब्लम इज आप हैदराबाद के हैं, आप बैंगलोर कैसा सपोर्ट करते? लाइक हम लोग एग्री नहीं करते उसका, मगर जो माहौल पब्लिक या भाई लोग कहाँ I met a couple of people from Bangalore who came like 700-800 kilometers चल के like आए कैसा की करके, कहाँ के गांव में कर्नाटका के, एंड लाइन हम विराट को देखे बिना जाएंगे नहीं। हो ना रीच की तो ये क्या है, अलग जुनून हो जाता है। और वो देश का धोनी याद है यार, पूरा देश का धोनी लास्ट में पब्लिसिटी होगा कुछ भी होगा भाई, आखिर में धोनी को एक्सटेंड करा दी। बट बिफोर तेजल भाई आप जाने से पहले खाली सरफराज खान के ऊपर थोड़ा लाइट फेंको। आपको कैसा दिखा सरफराज खान? आई मीन आप तो रणजी से भी देख रहे हो उनको, हाउ डिड इट फील? मतलब जिस तरह से वो रणजी में बैटिंग कर रहा था लास्ट 3 साल से, वही कंटिन्यू किया है उसने। बात देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग्स में आप देखो कि जब स्टार्टिंग में आया था, जब ऑफ द मार्क भी नहीं था, एक उसने स्वीप मारा था जो खड़ा हो गया था और उनके बॉलिंग पे थोड़ा नर्वस था स्टार्टिंग में, पर बाद में जो कैपिटलाइज करके जो मारा है वो मतलब उसने दिखा दिया कि भाई जो रणजी में रन बनाए, मैंने ये पिच पे रन बनाए, तो मुझे खेलना आता है स्पिन, मुझे आप कौन सा भी स्पिनर सामने ला दो, कैसा भी दे दो, मैं मारूंगा। और ये भी देखा मैंने कि सीनियर पार्टनर के लिए जो रिस्पेक्ट है और जो कुछ है कि उनको पता था कि जडेजा आ रहे 100 के उधर है, तो बिना कुछ सोचे भाग लिए रन आउट हो गए। और मुझे लगता है कि वो 100 डिजर्व करते थे। आज भी अगर उनको 2-3 आज भी बेचारे का पट्टा काट दिया आज 2-3 ओवर खेले तो मार देते थे आज, और 2-3 ओवर एक्सटेंड कर देते। मेरा एक सवाल है, आप जाने से पहले आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं आईपीएल में? मुंबई। अच्छा मुंबई। अगर एक सिचुएशन आ जाता, ठीक है,
जहाँ पे माहौल बनाना है और मैच फंसा हुआ है एंड इट्स रिलायंट ऑन द फैंस। वानखेड़े में मैच है और आपको शोर मचाना है, आवाज मचाना है। आरसीबी से मैच है, विराट कोहली आपके सामने, आप उसको बू करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, ये तो आपने इतना देखा रहेगा कि मुंबई का जो क्राउड है, मतलब जो फैंस है, वो बू नहीं करेंगे विराट को। कभी भी देखो, कभी वानखेड़े में आओ, वो नहीं दिखेगा, और क्योंकि आप देखो, मैं आपको ठीक है बिल्कुल, वो लाइक आप गलत नहीं है उसमें, आप मैं लाइक सही सिर्फ है। अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जो फैन बेस है मुंबई का, या, वो बोल रहा हूँ मैं। मगर अब देखो इंग्लैंड में आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं, ठीक है, एक बंदा हाँ, ने बराबर। वेस्ट हैम को ट्रॉफी जिताया पहली बार 20 साल में, उसकी ले रहे थे और 6-0 हार गए, और उन्होंने गोल भी मारा उसमें, गोल भी मारा और उसकी ले रहे पहले मिनट से। तो इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव, कल्चर कैसा है आपका, लाइक इट डिपेंड्स ऑन दैट। अब मैं लाइक ये कल्चर में था तो मेरा ये है, आप लाइक इंडियन कल्चर में यू हैव टू रिस्पेक्ट लाइक योर हीरोज एंड विराट का एवरीथिंग। कैसा कोई और है तो अब देखो, आप अभी विराट की बात हो, इसलिए जब हार्दिक पांडे आएगा टॉस पे तो सबसे ज्यादा वो हार्दिक पांडे ही होगा। बट दैट्स सैडर ना, मतलब बिकॉज़ किसको, आपका हार्दिक हाँ, पांड्या आपकी टीम का है, दैट्स व्हाट सैडर, वही तो बोलना चाह रहा हूं मैं कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जिसको रिस्पेक्ट करना है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, जिसको बू करना है उसको बू करेंगे। यही है। वही है कन्वीनियंस का हिस्सा हो जाता है। वही है इन टर्म्स ऑफ क्लब्स इन इंग्लैंड, एंड वही बताना चाह रहे हैं मुस्तफा भाई कि भाई दैट इज द डिफरेंस इन लाइक फुटबॉल फैन मेंटालिटी या कोई भी। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि उन लोग सही है कि अब जो प्लेयर हाँ, जिताया उसको बू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं बस कल्चर का डिफरेंस बता रहा हूँ थोड़ा, लाइक वहां पे दे डोंट केयर कौन है सामने, अपनी टीम में भाई, लाइक इट डजंट मैटर, भाई डजंट मीन इट्स एक करेक्ट और और स्टोरी रॉन्ग। सुनाता हूं मैं आपको। जॉन टेरी बोल के एक चेल्सी का प्लेयर है, उनके फादर एंड एवरीबॉडी सपोर्ट्स वेस्ट हैम, द होल फैमिली वेस्ट हैम यूनाइटेड बहुत बड़ा है। जॉन टेरी गोल मारता है, गोल मार क्यों करता है, उसका फादर यूं मिडिल फिंगर बता के उसको, उसका चाचा, दोनों फादर और चाचा सामने आमने हैं जॉन टेरी के। जॉन टेरी गोल मार क्यों कर रहा है, मिडिल फिंगर बता रहा, बाप अपने बेटे को बता रहा है और चाचा भतीजा को बता रहा है, तो वो सोच लो वो मेंटालिटी है। वही है ना कि जैसा बोलते हैं ना कि आपका जो क्लब है, आप फुटबॉल क्लब जो आप जिसको सपोर्ट करते हो, आप कभी खुद ऐसे डिसाइड करके नहीं करते हो कि मुझे यूनाइटेड को सपोर्ट करना है, कि मुझे रियल मैड्रिड को सपोर्ट करना है। जो बचपन को आपको एक बार पसंद आ गया तो यू विल बी लॉयल टू दैट क्लब बिल्कुल जिंदगी भर। वो वैसा इंडिया में नहीं है। या आप मुझे कभी भी बोल दो कि मुझे कभी भी पूछा, मतलब रोनाल्डो निकल गया, बेंजेमा निकल गया, पर कमिंग कितने भी इयर्स रहे, मेरा फेवरेट क्लब, मेरा क्लब तो बोलूंगा मैं रियल मैड्रिड ही बोलूंगा। आपको हाँ। पूछा तो आप बोलेंगे कि यूनाइटेड ही है, पर ऐसा इंडिया में नहीं है। अगर आप देखो, अगर धोनी मतलब धोनी पहले उधर था, चेन्नई में था, फिर पुणे में आ गया था, तो लोगों का ऐसा था कि पुणे हमारी टीम है। अब अगर सब जो स्पेकुलेशन आ रहे थे कि रोहित टीम चेंज करेगा, रोहित के पूरे फैंस का टीम ही चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। ये जो मुंबई था तो वो डायरेक्ट दिल्ली या दूसरे इसको ये करेंगे। तो वही डिफरेंस है, वही कल्चरल डिफरेंस है। जो फुटबॉल क्लब आप एक बार पकड़ लेते हो तो वो खत्म नहीं होता है, पर आप जो फ्रेंचाइजी पकड़ते हो इसमें क्रिकेट में, वो प्लेयर टू प्लेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका है। आपके लिए हैदराबादी अच्छी रहे, मतलब आपकी टीम रहेगी, मेरे लिए मुंबई रहेगी, पर जो ऐसे डायहार्ड फैंस है उनके लिए चेंज होते रहेगा कंटिन्यू। And that's why it allows people to continue to support RCB. लोग बोलते हैं बहुत लॉयल है फैंस, बट अगर विराट जाते कि अगर विराट कोहली 5 साल पहले निकल गया और यही रिजल्ट्स आते थे तो कोई नहीं बचता वहां पे, तो वो भी है, राइट? So it's not like they're only they're patient and everything. It's because Virat Kohli is there. That's a big part of the. I mean बैंगलोर के फैंस, आई डोंट नो बट जो है, बट लाइक बीएफसी जो क्लब है उनकी बैंगलोर, उन लोगों के भी फैंस बहुत लॉयल है। लाइक आई हैव सीन देम ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्टफ टू स्टफ, लाइक बैंगलोर इन जनरल एज अ क्या बोलते हैं टीम और जो फैंस मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबसे ज्यादा आईपीएल में, वो है पंजाब के फैंस और दिल्ली के फैंस। ना कोई बड़ा प्लेयर आता, ना तो कुछ जीतते, ना कुछ, वो है लाइक बिकॉज आरसीबी में फिर भी ब्रो, अगर आप मेरे को बोलेंगे बैंगलोर का मैच चलो जाके देखेंगे, आई विल से ऑफ कोर्स विराट कोहली खेल रहा, क्यों नहीं जाएंगे? एबी डिविलियर्स खेल रहा, क्रिस गेल खेल रहा, इट्स वेरी इजी टू गो टू द चिन्नास्वामी एंड वॉच। गो वॉच दिल्ली कैपिटल्स, मिस्टर you know what's his name, सरफराज बैटिंग विद आपके, कौन है वो जो विकेट कीपिंग बैट्समैन था इंग्लैंड के, अभिषेक पुरेल, फिल सॉल्ट, वो जाके देखो, फिर तब बोलो लाइक यू नो। तेजस भाई आपको निकलना है, आप निकल जाओ, चलो बाय बाय, थैंक यू।
Yeah, and Fez, So, yeah. we were backing, like what's his name, Mayank Agarwal, Mayank Markande, and these guys. That is where you get tested. Uh, but yeah, we were also not backing. I mean, we were giving a little bit of credit to KS Bharat, but Dhruv Jurel Mustafa today he proved batting wise he was good. Keeping wise, I Yeah. think he was fantastic. Run out especially, I was very like the way he maintained body balance and the way he managed to collect it and hit the wickets. वो बहुत जबरदस्त था. Like वो इतनी तेज आया सिराज के तरफ से, like वो control करना बहुत जबरदस्त job था. And then थोड़े बहुत गालियां खाए इनिशियली कुलदीप भाई के, उसके बाद ही मैनेज टू कीप वेरी वेल. तो ध्रुव जुरेल के लिए भी एक सेंसेशनल debut tha, I think it was a good debut. Yeah, I think especially the second innings with the gloves, what he did, it was very good. And let's आपका see, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? Jadeja. नहीं यार, वो कम ऑन, जायसवाल नहीं था मेरे लिए. तो जायसवाल था. मैं बोलता हूँ क्यों. मेरे हिसाब से वो जो सिचुएशन था 31 for 3, वहां से उन्हें जो सेंचुरी मारा वो मैच पलटा दिया रोहित शर्मा के साथ. वो पार्टनरशिप वाज द की पार्टनरशिप फॉर मी. Imagine 31 for 3, then you're 200 all out, and then you're not winning this game. Like even if England bundled out like that, they have a 100-run lead. So I think that is where the century was good, bilkul, but even like then, Sarfaraz's inning contribution, Yama I 109 from the tail. Then आपकी थोड़ी बहुत पिच फेवर में आ गई थी जब आप बॉलिंग कर रहे थे, because it already ठीक है. Like वो मैं मानता हूँ, मगर जो जायसवाल जो खेला आउट ऑफ हिज स्किन, and अगर जायसवाल आउट हो जाता था, शुभमन ना आउट हो, I mean, yeah, maybe in the context that you put it, yeah, it looks like. But for me, अगर जायसवाल नहीं बैटिंग अगर नहीं मारा भी, लीड थी आपकी. आई थिंक जहां पे मैच फंसा हुआ था वहां पे निकाला मैच. आप जो मैसेज पे पूछे थे, मैं समझा आप कुछ और बोल रहे थे. Like that's why I didn't think you're talking about man. हाँ, Kyle Jameson had a relapse of his back stress fracture, is out for. I mean, that guy, man, he's become very injury prone. The only time we saw like him perform was at like India में भी जो डाला था against India and stuff. World Cup में भी उन्हें आ गया था, फिर इंजर होके चले गया था. Like it's sad for him. I hope he gets back, better, and hopefully वो back का तो बहुत गलीज issue रहता. We've seen it with Shreyas Iyer, we've seen it with Hardik Pandya, we've seen it with a lot of players. But yeah, hopefully come back. Tristan Stubbs and Shardul are the biggest scam in the world cricket as an all-rounder. Tristan Stubbs actually smashed it in the SC20. So I mean, we know what Stubbs is capable of doing. Shardul also, Shardul decent जितना उसको देते ना task, Shardul कर लेता. मतलब pick था, he's given license to get hit, but he does pick up a wicket. तो शार्दुल ठाकुर को अगर आप कभी बैटिंग कर लेता, कभी ऑलराउंडर का टैग नहीं दे सकते maybe, but yeah, I guess it's like they managed to do the best with what ability they have. They managed to do it, I think. शार्दुल problem is when he gets spanked, that's it, man. बहुत बुरा मारते उसको, लंबे लंबे छक्के ग्राउंड के बाहर. So that is the biggest issue that people have with Shardul Thakur. हैदराबाद वालों के पास तो बहाना भी है बैंगलोर के फैन का, बट सिराज को देखते भी नहीं भाई. विराट के ही पीछे रहते हो ना, सिराज को भी लाइट ले लेते एक टाइम पे. बट या आई मीन सिराज भाई अगर आगे हैदराबाद को, तो बी अ वेरी गुड कमबैक फॉर हिम होम. बट आई एम प्रीटी श्योर ही लाइक्स टू प्ले विद विराट कोहली. विराट के साथ आई थिंक सिराज चले जाएंगे मेरे हिसाब से. लाइक सिराज विल कॉल इट अ डे व्हेन विराट लीव्स आरसीबी. इस भरत फुल सेलिब्रिटी की फील ले रहा है आंध्रा में. मैंने न्यूज में आया, मैंने यहीं का है, विशाखापट्टनम का ही है, लाइक संजू सैमसन, राइट? आप तो देखे संजू सैमसन कतर वर्ल्ड कप में ट्रेंडिंग चल रहा था भाई वो, when they were not picking him and stuff like that. So yeah, I mean South में they really they back their players a lot. Stubb was excellent wicketkeeper during 100%. I agree with that. ST20 में he was fantastic and है potential. He just needs a string of good games. But yeah, I mean overall 2-1, which we didn't. I mean मैं थोड़ा बहुत upset हूँ. I told you this as well, Mustafa. Like I was upset because the way the test match was heading towards 207 at day 2, मैं समझा यार इंग्लैंड मारेगी, इंडिया का एक फाइट बैक दिखने को मिलेगा कि दिस इज व्हाट इंडिया विल, एक कैरेक्टर निकल के आएगा कहीं से, कुछ तो भी होगा ये वो. बट यार इंग्लैंड हक दी वहां पे, हक के बैगन में मिला दी पूरा टेस्ट. फिर भी कैरेक्टर निकला. Like you saw, Siraj, the spell that he bowled, the way they bowled, you still saw that. I think, yeah, like England made it easier with mistakes, but डेफिनेटली उन लोगों की गलती है उसमें. लेकिन इंडिया को भी तारीफ आप कर सकते कैरेक्टर का. I think it was incredible, and I was not really confident after day 2, but they played really well. And you consider the situation, Ashwin gone, everything. I'm just saying from England's point of view. I'm just saying like they could have made a match out of it, and it's just like I was a little upset. अरे भाई तुम
अच्छा टेस्ट सीरीज चल रहा है. फर्स्ट टेस्ट वाज फैंटास्टिक. सेकंड थर्ड टेस्ट भी थोड़ा बहुत मेरे लिए इट वाज लाइक अरे यार ये क्या हो गया. इट वुड हैव जस्ट बीन फन कि भाई फाइट बैक देखो. 140 की लीड, 124 120 की व्हाटएवर लीड थी, उधर से क्या लगता है अरे भाई हाँ भाई आधे से ज्यादा रन बन गया. अब थोड़े माइंड सेट इजी होता. जब प्रेशर में एक टीम रह रही वो जरा देखने को मजा आता था 4 में एटलीस्ट. बट इट्स फाइन. एट द एंड इंडिया जीती. दैट्स व्हाट मेनली मैटर्स फॉर एवरीबॉडी इन दिस जो भी हमारे साथ है. बट 2-1 मजा आने वाला है. रांची में क्या करने वाले कैन बेन स्टोक्स टर्न थिंग्स अराउंड. उनका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी उनका मुंह उतरा हुआ था थोड़ा बहुत. बट ही वाज लाइक नहीं, अब सबका एक परसेप्शन होता है भाई. सबला सोचते कि भाई बैसबॉल बेकार है ये वो है. बट फैक्ट ऑफ द मैटर हम लोग ये क्रिकेट खेलते जाएंगे और एग्रेसिवली खेलते जाएंगे. तो इट्स लाइक थोड़े लोग शायद उसको ट्रांसलेट करेंगे भाई नहीं ये बंदा स्ट्रॉन्ग माइंडेड तो नहीं, एरोगेंस है नहीं, बल्लिंग नहीं रस्ते और वो. बट आई थिंक इट्स जस्ट व्हाट दे बिलीव इन, और वो फेथ रखना बहुत जरूरी है आपके उस पे. एंड होपफुली रांची में दे मैनेज टू डू समथिंग. बट ओवरऑल अभी बेन स्टोक्स के अंदर थोड़ा आई थिंक प्रेशर तो उन्हें खुद नहीं लेगा, बट थोड़ा बहुत है कि भाई कैसा आप लोग 50 ऑल आउट हो जा रहे 122 पे. एंड गुड बैट्समैन यार, जो रूट आप जो इंडिया में देख के हैं इन लोगों को परफॉर्म करते हुए आज बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया में हैं. इट्स जस्ट सैड टू सी के भाई ऐसा डिमेंशन जा रहा था टेस्ट मैच के भाई वाकई ये कुछ अलग निकलने वाला है. बट देन डे 3 पे जो तरीके से इंडिया बोली आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक. फिर वहाँ पे मैड्रिड में मैड्रिड आने वाला है. बहुत ज्यादा रूमर स्ट्रांग हो गया. अब तो फब्रिजियो भी डाल दिया भाई मैड्रिड के ऊपर हैंड. उन्हें बोल दिया आई थिंक क्लब को कि ही इज गोइंग टू लीव इट इन द समर. तो आई थिंक मबाप्पे विल बी हेडिंग टू मैड्रिड. बट दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि भाई उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे. प्लेयर तो बहुत फैंटास्टिक है वो सुने लाइक नेक्स्ट लेवल. बट या टेस्ट अगला टेस्ट कब रहेगा आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इन अ कपल ऑफ डेज. इट्स ऑन द 23rd आई थिंक 23rd पे रहने वाला है. एंड देखना ये है कि रांची में कैसा विकेट रहेगा. प्रॉब्ली टर्निंग विकेट. ईशान किशन आएगा शायद देखने मैच को. ईशान किशन पता नहीं वो क्या सिचुएशन है. धोनी तो रहना वाला आई थिंक. धोनी एंड लाइक इट्स देयर होम टर्फ. आपके एम्बाप्पे क्या कर रहे हैं? एम्बाप्पे इज गोना गो टू मैड्रिड. Do you see Iyer and Kishan fighting a way back into the Indian team, or slowly the door will close on them, especially with Kohli, Kier, and Pant also returned in the team? They have to do something massive in the Ranchi circuit. Like they have to bang it. The message is clear. You gotta play domestic cricket. Yeah, and you see whatever you got right now from domestic cricket in a Dhruv Jurel, in a Patidar again. We'll come to him just like 1 minute. But Sarfaraz and stuff, they've been very good to see. But Patidar, yaro, I feel bichara bahut. I think it's very difficult to predict. Like anything can happen. Yeah. Like if you told me at the start of the series, forget about last year. The start of the series, अगर आप मेरे को बोले ये batting lineup होने वाला है in the fourth test, I thought you'd be joking, man. Like no Virat Kohli there, no Rahul. How the hell is that going to happen? So I think that we don't know what the future can predict. Anything can happen, man. So injuries are very common in India's team and stuff. I'm very worried about the next 2-3 months. Very worried. I'll be honest with you. If you're just looking at it from a fan perspective, भाई आपको पूरा 2 महीने खेलना है और ये पहले सीरीज खत्म हुआ नहीं और 2 मैच भाई उसके मिड्स में मैच के मिड्स में बुमराह भाई का हैमस्ट्रिंग पकड़ ले रहा, सिराज का घुटना चले जा रहा. भाई वो तो मेरा दिल पकड़ लिया था जब बुमराह मैं भाई इसको बिठा दो. लाइक इसको अगला टेस्ट मत खिलाओ यार. लाइक लेट हिम सिट, जस्ट लेट हिम सिट. डोंट लेट. भाई आपको याद है दुबई में जब आईपीएल हुआ था हम लोग सब बोले कि वी आर यूज्ड टू द कंडीशंस नाउ, आने दो वर्ल्ड कप, आने दो. भाई ग्रुप स्टेजेस में लग गए आपके. You didn't manage to cross the group stages. Yeah. नहीं बिल्कुल. I mean Dubai is not happy hunting for India, man. Apart from the 2018 Asia Cup, it's not a happy hunting place. But do you feel like they'll sit anyone out like Bumrah? Yeah, I think they should. I mean, we feel, but they should. But I feel it. Yeah. अगर आप मेरे को पूछे कि will Bumrah take a rest? Maybe जो emphatic victory मिली आपको ये टेस्ट में, मेरे हिसाब से आप उसको थोड़ा आराम दे सकते हैं. Like. But man, वही यार जायसवाल जिस तरीके से बिल्ड हो रहा है. Again, रोहित शर्मा की बात बहुत पसंद आई मेरे को. What he said, like yeah, I've spoken about him a lot, but I don't want to talk a lot about him because he just started his career. अभी करियर की शुरुआत है, अभी से ज्यादा चढ़ा दिया तो मैं आगे जाके it'll hit him. So let's just hope he maintains his consistency and leave it in the future. क्या होने वाला है. So अच्छा, he's not giving him a lot of confidence कि भाई तू ही है अब तुम ही है ये वो है. Enjoy the moment. ठीक है, move on. Like don't swim there in the same कि मैं 200 मार लिया ये नहीं.
आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट मैच में देखेंगे क्या होता। फैल भाई, मुस्तफा भाई, फेवरेट फुटबॉलर्स और ला लीगा क्लब्स के नाम बताओ। ला लीगा ला लीगा तो रियल मैड्रिड था मेरा तो, लाइक फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड रोनाल्डो लाइक फॉर श्योर। Yeah, I like both Madrids. I like Atletico also. Atletico. Yeah, I like both of those. Favorite footballer अभी present modern generation में Modric. Modric, yeah. Ever बोले तो like Van Nistelrooy, Zidane. I really liked them, Zidane, Van Nistelrooy, but Ronaldinho, man, he's crazy. उन्हें तो जो 3 साल दिया, माँ तो अलग ही हो गया था। Ronaldinho, his stuff I'll never see, man. I've never seen again in my life, which is crazy, bro. सिराज पांड्या थोड़ी ही जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, कल जैसी हैमस्ट्रिंग खींच गई थी सिराज की, अगर पांड्या होता तो वो बाहर हो गया था 4 महीने के लिए। I mean, again, extent of the injury ये वो है, but again, it was just cramps. आपके कौन है फेवरेट फुटबॉल बोल दो स्पोर्टी भाई को। क्रिस्टियानो बोले ना, क्रिस्टियानो ऑल टाइम तो हाँ, लाइक पांड्या का तो भाई हैमस्ट्रिंग का आई डोंट नो मैन, दिस गाय इज, उसका भी कोई भरोसा नहीं है वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा। ही इज सपोज्ड टू बी वाइस कैप्टन, आई डोंट नो इफ इज मैंने उसका अलग अपन कुछ जैसा आप बोले ना, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते अगले 2 महीने में क्या हो सकता है, लाइक उसका वाकई कुछ नहीं बोल सकते अगले घंटे में क्या होगा, वैसा सिचुएशन है उसका। तो आप बोल ही नहीं सकते कि सीडी ज्यादा जोर से चढ़ गया, इंजरी हो गई, वो भी इसके साथ हो सकता है, लाइक विद हार्दिक पांड्या के स्टेज चढ़ा मगर वर्ल्ड कप का राइट आफ्टर द आईपीएल श्योर। Yeah, but condition in West Indies again, यार वो बारिश के आसार होते हैं, और जब that's what I don't like it might rain, it might, that's something. Yeah, like America is going to be summer, but it can still rain in the summer, you know. Yeah, like in the West Indies series for India also it rained a few times, right? जिसमें match थोड़ा बहुत रुक गया। I think West Indies में best time यही रहता March, April, right? हम लोग जब वो दिखते थे 10 sports पे, वो इस पे यही time पे होता था March, April time. Yeah, बिल्कुल, and I mean वही है कि मैराडोना पहले को देखे, मैं तो देखा नहीं है भाई, खाली हाइलाइट्स देखा। नहीं हंस रहे कई को सी, नेमार इज अ वेरी गुड प्लेयर, एम्बापे तो नया है, आई मीन ऑल टाइम ही इज क्रेजी मैन, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट लाइक मैराडोना पहले का ये कि वी हैव नॉट सीन देम प्ले राइट लाइक दिस, हार्ड टू से इन हाइलाइट्स, बट जिदान वाज लाइक वाओ, जिदान के हाइलाइट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं, लाइक ही इज जनरेशन में तो है अपने, तो लाइक जिदान इज इनक्रेडिबल। अगर आपको सही सीडीएम एंड कैम भाई नेक्स्ट लेवल, उन्हें हंस रहेंगे कई को भाई, आपका पसंद आपकी है, हम लोग क्या देंगे, but yeah, I mean good win under India's belt। राजकोट से हटेंगे अब रांची को in a couple of days, 23rd कुछ है, immediate turnaround for Ben Stokes, so like उसका भी mentality अच्छी आ रही है, like yeah, we leave it here and we move on to the next game, we see वहाँ क्या होता है। It's like टूटा हुआ तो था थोड़ा, he was a little upset, he looked like अरे shit क्या हो गया बोल के। Yeah, and you can see the English journalists are ripping into them right now, you know, like I think the Telegraph said that was the worst dismissal ever, and they like 2 years ago they had praised that Joe Root reverse sweep, and now they're saying the worst dismissal। BBC wale bhi, Michael Vaughan's also dipping into them a bit, so criticism to daba ke aane wala hai, but he was not going to care, they're going to continue to play like this, and it's just like I said, you know, minor adjustments depending on aapka jo situation hai, usme aapka kya requirement hai, वैसा आप अगर खेल के देखो, because देखो जायसवाल भी खेला बास्बॉल, सरफराज भी खेला, मगर एक सिचुएशन में खेला। जडेजा वो सिचुएशन में अगर बास्बॉल खेल दिया तो मे बी इंडिया वुड हैव लॉस्ट विकेट्स, so I think you have to just look at it, it's a 5-day game, so you still have to consider that। I like the approach, I have no problem in it, but just sometimes अब देखो वो shot like it should be calculative जैसा आप बोल रहे हैं, that's what I always analyze that shot, right, that reverse sweep, yeah, you can say there was no need to play that shot or whatever, why did he play this and that, but it's actually a very productive shot for him to release, it's a release shot। उन्हें भाई कमिंस को मार दिया वैसा, वो भी इंग्लिश कंडीशंस में, यहाँ पे तो फ्लैटर पिच है and everything, so if you actually look at his intention wasn't wrong, but the execution, because of the execution, I think the person I criticize is Ben Stokes, he's like, I didn't understand his batting in the first innings, I really didn't understand it। Joe Root, it looks very ugly now, but if you look at the percentages and everything, it's a very good shot for him। The problem what I feel is that, yeah, the problem मेरे को दिख रहा है was a bit sad, Bairstow was a bit like ठीक है, like एक दो shot they were on, but like his overall form, maybe you need to be a bit more careful।
Yeah, I mean, अगर आप Ben Duckett वाला है ना, they he broke the spirit of the bowlers and that is where you capitalize, right? जैसा जायसवाल और सरफराज आप बोले, जब उन्ना खेल रहे थे potential England bowlers didn't know what to do. अरे क्या करेंगे ने, जिमी को मार दिया, मेर को मार रहा, बाजू वाले को मार, सबसे स्पिरिट टूट गई थी. जब आप कैपिटलाइज करो बेसबॉल पे समझ में आता है. लाइक फील्ड के साथ फिर उन्हें रोहित शर्मा खेलेगा, पैनिक होगा. आप पैनिक क्रिएट कर ही नहीं रहे, आप उल्टा विकेट आप देख के आ जा रहे. लाइक तो पैनिक क्रिएट होने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं बन रही, ना बॉलर्स थकने की अपॉर्चुनिटी मिल रही. आप आराम से दे दे रहे हो, आगे आके आप मारने जा रहे हो, जहाँ पे फील्डर प्लेस हुआ वहीं मारे आप. लाइक दैट वाज ब्रिलियंट कैप्टन थे रोहित शर्मा. बट स्टोक्स का तो वेरी वेरी सैड टू सी द वे ही इज बीन इन दिस टूर्नामेंट. और अगेन लाइक इंग्लैंड का वही है यार, चलो 2-1 अप है बट यू स्टिल फियर देम बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एंड व्हाट यू सीन देम डन इन द पास्ट. एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल ब्रिंग everything that they have in Ranchi to win it. Yeah, and look, exactly. We're one match away from changing the narrative again. 2-2 going into Dharamshala. Then we'll flip the criticism on India. Dharamshala will be very good for England. The wicket. Yeah, so like we're one. Look, it can go south also for England right now. It can go north. It just depends on how they perform in the next Test match. And with this approach, we don't know what to expect. And you always have to be on the toes as opposition. So it should still be a good series, I think. या बिल्कुल, मैंने भी हाईलाइट लिखे हैं. केविन पीटरसन इंडिया में कुछ बोलता है और बाहर कुछ कहता है. बेस्टो को लात मार के बटलर को लाना चाहिए विजडन पे. या आई मीन बटलर वुड बी अ गुड इंट्रोडक्शन, बट अगेन फोक्स अच्छा ही विकेट कीपर. अब बटलर को खाली आप आई थिंक खाली आप उसको बैट्समैन के जैसे ला सकते, बट उसका भी फॉर्म रिसेंटली इतना ग्रेट नहीं रहा है. लाइक इवन बटलर हैज बीन स्ट्रगलिंग. Bairstow का वही है यार, he can change the context on his own as well, and we've seen that happen. So it's just वही है कि again, I think he would only consider Butler as an opener because he's something different. Like Butler plays in middle order in Test matches. That's his position where he can easily fit in there. That is completely correct. मगर इसका जो mindset मेरे को दिख रहा, जो उन्हें जैसा strategize करता, the only place I think, and right now there is no slot because of Zach Rowley and Ben Duckett, but that is the only place I think because it will suit also कि नया बॉल आप जाके पे लो, आप 50 रन का स्टार्ट दे दो जल्दी जल्दी 20-30 बॉल में, एंड उसके बाद हम लोग देख लेंगे. I think that's where they want Butler. They like Bairstow in the middle order because he's someone who can counter attack. He can play the big shots in the middle as well against the older ball. So that's why it's just that उसका फॉर्म बहुत गलत चल रहा है right now. So maybe that's why I'm saying bring Butler in. But is he the right call? I don't know. अभी तो डैन लॉरेंस भी है उनके पास. ये स्क्वाड में डैन लॉरेंस, आई एम प्रीटी श्योर जिमी एंडरसन को तो बिठा देंगे. ऑली रॉबिन्सन को ला सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. वो देखना पड़ेगा. फिर तो पिच रीड करना पड़ेगा कि रांची की पिच कैसे होंगे एंड स्टफ लाइक दैट. बट आई डोंट थिंक इंडिया विल नाउ गो विद अ फ्लैटर सरफेस. दे वांट टू ईट इट अप इन रांची, राइट? सो आई थिंक कहीं ना कहीं टर्नर हो सकता है. I think so. I want it to be a turner, but I mean the pitches have been good for viewing also. India's winning, so I don't know if they'll change that. But yes, like you said, inexperience होने के वजह से maybe आपकी बात बिल्कुल सही है. अगर टर्नर लिए तो you already when England is already under pressure, एकदम से आप बॉल वन से जिप जिप करना शुरू कर दिया तो और परेशान हो जाएंगे. Maybe that is the correct call. लेकिन the fact that you've won on these surfaces and your batsmen have a lot of confidence now, I don't think. But inexperienced batsman that could backfire if you put a turner. Maybe that could also be the flip, right? तो both way देखना पड़ेगा अपने को. But yeah, I mean overall India is 2-1 right now. It's been a fantastic comeback from them. जिस तरीके से mentality अच्छी shift है यार India की. I like it. The bowlers particularly Kuldeep Bhai and Siraj, the way they bowled and they broke down the door, right? Like जो barriers में wickets नहीं गिरे थे दोनों. I think इन लोगों को भी आप you need to give them a shout out. Siraj in the first innings got that wicket. I think it was LBW or something that he got, and Kuldeep Bhai got Ben Duckett out. The way he got out Ben Duckett, it was clear frustration. Like he didn't understand what he was doing. And then England just spirit टूट गई, बैगन में मिल गए. It's like अरे अब क्या करेंगे? And Bairstow गया, Stokes गया, Foakes गया. Like they don't have anyone who's going to stand there. And I think that is where Joe Root really needs to, for his betterment, take his time. Yes, you are a Bazball player. I'm not going to take that away from you. But you need to also play, like you said, the situation. England really needs to play according to it. They can't be, क्या बोल सकते नहीं हम ऐसे ही खेलते. Sometimes it works, sometimes it will. Most of the time, like situation ऐसी आप ऐसा खेलो भाई. अब और 200-300 मारना है आपको. अभी 207 for 2 है. आप वो बात पे जो है, I think Nick Knight, Sunil Gavaskar, Ravi Shastri were having very interesting conversation on Joe Root in particular while he was batting, and they were all three saying this, like, but Nick Knight had something very interesting was I don't think Ben Stokes and McCullum told him to play like this. He's just like wanting to play, like, because
they're saying play how you want to play, like whatever you want, but because it's worked for him, his average thoda sa bump hua, his strike rate also bumped, he was scoring runs, effective runs. That's why maybe he wanted to do that. But I agree, अगर जो रूट परसों के दिन पे अगर उन्हें वो नहीं निकाला रिवर्स स्वीप छोड़ दो, अगर उन्हें आराम से खेला उन्हें सो ठोक देता था if he just played his natural game. Effectiveness of runs ये भी हो सकता है कि आप like आप बोल रहे सिचुएशन जो आपके सामने है उसके हिसाब से आप अपना play your style. या तो आप डिफेंस करो when you require like let's say a lot of runs and आप वो करने जा रहे, ठीक है, it makes sense. But when you're in a situation where you need to build something from the ground, because आपका विकेट चल गया, जब आपको ऐसा एक अवतार में आना है जहाँ पे आप जो डिफेंडर है. You know, the problem is, like, actually, when they're in a pressure situation, they do play according to the situation. It's when they're on top and they're dominating, controlling the game, वहां पे जाके फेंक देते हैं उन लोग. मेरे को वो थोड़ा सा confusing दिखता, because आप हैदराबाद में देखो, the run rate was 7-8 रन ही थे, it was 4.5 चल रहा था. Normal run rate था, ठीक है, it was faster than the regular test run rate, but it was 4.2, 4.3. The way, Ben Foakes was batting a strike rate of 30. It wasn't Bazball per se. They were playing to the situation. They were doing it at a time where like their hands were tied. Now when they're in a very good position, because they got there by smacking, they said we continue to smack. That's why they just have to hold their horses a bit, or just play, like you said, according to what the situation demands at that time. And Ben Duckett already उन्हें इतना मारा कि भाई आपका रन रेट बहुत अच्छा था, कोई टेंशन ही नहीं थी. मगर वही है, कप्तान अगर आके बोल रहा हम टीम में डिक्लेयर करना चाह रहे, वो थोड़ा जल्दबाजी में या बहुत आगे की प्लानिंग में आपके लग गए, वही है प्रॉब्लम. बिल्कुल. इंग्लैंड को तो बहुत काम करना है अभी. They need to go back and look at the last 2 test matches, particularly the place where they lost it, right? Like डे 4 पे जो टारगेट सेट थी, आप अगर 2 दिन के हिसाब से अगर वो टारगेट लेते थे, आप बहुत अच्छा कर सकते थे वाइजैक में भी. बट आप उधर जल्दी में डे 4 में मार दूंगा. मेरे को जो लगता है, दिस व्हाट आई फील, कि भाई you have 2 days, you utilize those 2 days, divide the total as to what you have to make, and then you make a match out of it, rather than just saying कि आज पूरे मैच में मैं मार दे के रख दूंगा. Like it's not going to work, because आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था with Zach Crawley in the second test and Ben Duckett, like you got there, and then थोड़े count, but there was no one who was standing together except Zach Crawley. There was no one else with him. And अगर वहाँ जो रूट अगर अपना क्लासिक खेलते थे, धीरे बॉलर्स को थका के, बॉलर्स का मोरल डाउन करके आप कैपिटलाइज करो. आई अंडरस्टैंड बॉलर्स फ्रेश है, बॉलर्स ताव में है, पिच उनके फेवर में, आप उधर जाके मारे तो बेवकूफी है. तो वो वाइजैक का था. और आज का 207 से लेके आप एकदम से जो कोलैप्स भी नहीं बोल सकते उसको, तो लाइक कोविड हो गया था पूरों को एक साथ, अच्छा हो गया था लाइक. तो आई जस्ट फील लाइक इंग्लैंड रियली नीड टू गो बैक. एंड बेन स्टोक्स 2 बार भी उनके ऊपर कैमरा आया जब ही लुक लाइक ही वाज इन अ थॉट कि क्या हो रहा है, एंड देन लैपटॉप में घुस रहे थे, डिसमिसल्स देख रहे थे कि क्या हो. एवरीबॉडी इज नाउ वर्किंग, एंड बेयरस्टो का भी वही था, वो लुकिंग एट डिसमिसल्स एंड स्टफ. सो या but for India, yes, Sarfaraz, Jaiswal, Jurel, Bumrah, Jadeja coming right at the right time. They're showing their forms back. Yeah, Sarfaraz के तो I'm very happy, man. सबर का फल मीठा होता है, वही हुआ like उसके साथ. That was the exact thing which happened with them, and that shows you keep on going, keep on grinding it out, be determined. छोड़ो मत आपका जो mission है. Keep on going. Never give up. Yeah. Bilkul. What do you think about SA gain from the NT Test series? For me, they found a middle. Yeah, Bellingham was fantastic. I think on it, 100 mara and stuff, like they've been good. And 2 all-round options in Brandon Disward. Yeah, I mean, yes, a situation में आप बोल सकते the way they, like, certain people come out and you can say yeah, 1 for the future, yeah, 2-3 for the future rather. But yeah, so just gonna wait till see South Africa के full-fledged team जब वापस आएंगे, yeah, it'll be more exciting to see, right? Yeah, I hope we get to see that, because you see West Indies, they are not playing the full-fledged, even though they killed it in Australia. Now they'll play this team only. But जो आपके दूसरे player थे, like they haven't been playing cricket for the Test cricket for the last 3-4 years. So I hope that's not the case with South Africa. I hope their players do come back, like Rabada, Ngidi, Bavuma, these guys, who's played in that India series, Jansen. I would like to see them continue to play Test cricket. So let's see what happens. So I think the next move. अभी तो PSL का भी मैच चल रहा है for people who are watching the PSL. Multan Sultan just got 27 for 1. Maltons. 5 for 1. Yeah, Maltons and Maltesers. And yeah, I mean, fun fact: Surya Kumar and Jaiswal both played under the coaching of Sarfaraz Khan. Yes, they both played under Sarfaraz Khan's dad, and that's where like then Surya भी आज अच्छा एक story post करा from the grounds to the stadium, playing together, Jaiswal and
सरफराज की फोटो डाल के he tagged them. अच्छा था overall, good victory for India. Lots of heroes, lots of negatives as well for England rather than India. But Rohit Sharma is turning heads with his decision making. A lot of criticism on day 2, day 3 flipped the argument. Good field placements, everything is looking up for them. We see next towards Ranchi. And yeah, hopefully we'll also review PSL games going forward. And yeah, lots like kariye, subscribe kariye. Sheikh Basma, any closing statement from you before we go? No, I think great comeback from India. Fantastic performance. Behtrin cricket khele. Very enjoyable to watch because when you're under pressure, that's what you want your team to perform. That's exactly ये test match में ऐसी हुआ. Within the test match, there were certain situations where India were on the back foot, but वो निकल के आए उन लोग और they put the pressure back on England. I think fantastic captaincy from Rohit Sharma. Him and Jadeja's partnership was key. Then the way Jaiswal, Sarfaraz batted. Sarfaraz both innings, outstanding debut, fantastic debut to dream of. And then your bowlers, incredible. Siraj, Kuldeep Yadav, Jadeja, Bumrah, and then Ashwin. I hope everything is okay with him and his family. Today we saw him at the ground, so I hope all is good. But the bowling was outstanding. They showed patience. They showed कि ठीक है India में runs पड़ सकते हैं आपको, but it's all about coming back and staying in the game. What Rohit Sharma said in the post match was very important. कि it's a 5-day game and you're always in the game. You can't just say take one session and you're out. No, you got to stay in the game, and that's exactly what they did. They were very calm, even though maybe through the stump mic you couldn't tell that, but they were patient in the way they were bowling and fielding, and it rewarded them. Bilkul, yes. So we'll see you guys tomorrow, hopefully, or for the PSL reviews and for a lot of other cricket going around. But till then, खुल के खेलना वो उन लोग का टैगलाइन है खुल के hashtag खुल के खेलना it's a jab at Rizwan and Babar, people are saying. It's been good, the first 2 matches. I mean, the first match was very good, where Islamabad demolished Lahore and the current champions, right? But yes, everybody, till then, thank you so much for joining us. Like, subscribe, share, and shorts देखते रहिए, reels देखते रहिए, Instagram पे follow करिए, and thank you so much and have a nice night. Thank you.